Hello everyone, I am Raghav Rathi. I am very excited to be here today to talk to you guys about a lot of things. तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं राइट, मार्केट आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक फेज में है जहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़, हर दिन कुछ ना कुछ इवेंट हो रहा है. जस्ट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स, हाल ही में फ्यू क्वार्टर्स में हमने अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन रीसेट होता देखा है. एट द सेम टाइम देयर आर मेनी ग्लोबल इवेंट्स व्हिच हैज हैपेंड जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया को भी इम्पैक्ट हुआ है. सो टुडेज डिस्कशन इज नॉट अबाउट एनी वन साइड नरेटिव, एनी वन साइड स्टोरी, बल्कि आज की डिस्कशन वील ट्राई टू डू अराउंड ट्रांजिशन फेज इन विच वी आर इन एज ऑफ टुडे, जहां पर बहुत सारी रिस्क, बहुत सारी वेरिएबल्स शायद अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी वेरिएबल्स जिन पर विजिबिलिटी डे ऑन डे इंक्रीज भी होती चली जा रही है. सो इस वीडियो के थ्रू वील ट्राई टू टॉक अबाउट, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारे चेंजेस, ये सारे डेवलपमेंट्स का इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए क्या इम्पैक्ट है. एट द सेम टाइम जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ऑडियंस है, उनको कैसे ये मार्केट्स नेविगेट करना चाहिए इन दीज नॉइजी टाइम्स, इन दीज वॉलेटाइल टाइम्स दैट इज देयर. सो या इस डिस्कशन के लिए वी हैव मिस्टर अनुपम तिवारी who has more than 2 decades of experience in the industry and he works as head of equity for Groww AMC. And yeah, we are very excited to have him over here as well. So yeah, let's get started. So hey Anupam, thank you for joining us. So मैं शुरू करता हूँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, विच इज मार्केट आज किस स्टेज पे खड़ा है. Earnings, after a few quarters of earnings downgrade and recent consolidation also, अगर आपको करंट मार्केट स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? या सो देखिए, हम लोग तो बीइंग अ इक्विटी इन्वेस्टर एंड फंड मैनेजर, हमको बाजार हमेशा अच्छा लगता है, राइट? स्पेशली व्हेन इट फॉल्स, बिकॉज दैट इज व्हेन यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू ओन स्टॉक्स एट अ गुड प्राइस. किसी भी स्टॉक में पैसे कमाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका एंट्री प्राइस क्या है, बिकॉज दैट यू कैन कंट्रोल. यू हैव सम कंट्रोल ओवर इट कि हमको कब खरीदना है. फिर वो कहाँ जाएगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? यू कैन डू एनालिसिस एटसेट्रा, अंडरस्टैंड, बट वो 100% आपके कंट्रोल में नहीं है. सो आई वुड से, इन माई ओपिनियन, मार्केट इज इन अ गुड शेप. तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट हैज हैपेंड. तो मार्केट ये इस तरह के फेजेस से गुजरता है कि इट गोज थ्रू यूफोरिया which we saw post COVID, right? When there was no tomorrow and everybody wanted to buy everything on the same day, and we had a big, uh, big movement in themes like defense theme बहुत ज़्यादा चली, फिर then some other theme came in, etc., etc. And then at some point of time, valuations went much beyond the fundamentals, right? तो मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइस इज ईपीएस इंटू पी, राइट? और ऐसा होता है कि जब आप, तो पी सेंटिमेंट और द स्टोरी बिहाइंड नंबर्स और कंपनी और बिजनेस. तो जब आप पी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो तो आप ईपीएस की चिंता नहीं करते हो. और फिर एक ऐसा समय आता है कि जब आपको ईपीएस बताने लगता है कि अब आप पी बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकते हो, तो वहाँ पे फिर वो स्टॉक प्राइसेस करेक्ट होना शुरू होते हैं. तो Q2 FY25 was the time when we started seeing downgrades, material downgrades. Okay. और उसके कुछ 3-4 कारण थे, और उन कारण को समझना, उन रीजंस को समझना बहुत ज़रूरी है. पहला कारण ये था कि जो हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर थे, उनमें 2 तरीके से प्रेशर बन रहा था. फर्स्ट प्रेशर पॉइंट वाज कि इफ़ यू रिमेंबर कि 2023 से यूएस में रिसेशन होगा, ये डिस्कशन चालू हो गया था. सो जब आप रिसेशन की बात करते हैं और वो बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, तो द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंपनीज इज टू रिड्यूस इन्वेंट्रीज. तो एक टिपिकल बुल विप साइकिल कहलाता है, और वो इन्वेंट्री रिडक्शन चालू होता है. उस इन्वेंट्री रिडक्शन के कारण हमारे यहाँ एक्सपोर्ट ग्रोथ में धीरे धीरे एक कमी आई. इस एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टार्टेड रिड्यूसिंग. ड्यूरिंग द सेम टाइम China became very, very aggressive in global market. So a lot of people use the word dumping, कि in desperation to continue its industrial production और अपना एम्प्लॉयमेंट बनाए रखने के लिए चाइना ने ग्लोबली चीज़ों को डंप करना चालू कर दिया. एंड 2025 के आसपास, अर्ली पार्ट ऑफ 2025, जब ट्रम्प बिकेम द प्रेसिडेंट, तो टैरिफ वाले प्रेशर चालू हो गए, राइट? तो उसके कारण अगर आप देखें, पिछले लगभग 24 महीनों में हमारे एक्सपोर्ट्स पे बड़ा प्रेशर रहा, एंड दैट कॉज्ड इम्पैक्ट ऑन आवर अर्निंग्स फॉर सम ऑफ द कंपनीज, और सम पार्ट ऑफ द कंपनीज जहाँ पे एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 100% नहीं, बट फिर भी 20-30% है. इंडिया के लिए एक्सपोर्ट काफ़ी मायने रखता है.
फॉर सम कंपनीज मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो एक ये पहला कारण था जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रेशर, चाइना प्रेशर एज वेल एज कि यूएस में रिसेशन हो जाएगा एंड देन टैरिफ का प्रॉब्लम। सेकेंडली व्हाट हैपेंड इज दैट अभी आप जैसे आप देखिए कि पिछले साल का बजट लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास मोटा मोटा था गवर्नमेंट का, और उसमें 11 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स था। अ, इस साल का बजट 53 लाख 53 लाख करोड़ का है, और उसमें 12 सवा 12 लाख करोड़ का आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये जो नंबर है ये बहुत सारी कंपनियों के ईपीएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉट जस्ट द नंबर, उसका एक्चुअल स्पेंड होना। इलेक्शन के कारण देर वॉज अ स्लो डाउन इन कैपेक्स। तो 24 मई में इलेक्शन हुए और उसका असर रहा अगले 6-8 महीनों तक। इनफैक्ट इन माई ओपिनियन इट वेंट ऑन फॉर 9 to 12 months, राइट। तो उसके कारण भी अर्निंग डाउनग्रेड्स हुए क्योंकि न्यू ऑर्डर्स आना, ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन वो काफ़ी स्लो हो गया। सो दैट वाज सेकेंड प्रॉब्लम दैट हैपेंड। The third problem was that during 2025 and second half, so 24, sorry, during 24, RBI maintained very tight system. तो लिक्विडिटी भी टाइट थी और हमारा इन्फ्लेशन गिर रहा था, बट इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए थे। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन था और इन सब के कारण कंज्यूमर सेंटीमेंट पे भी असर था। तो हर जगह से वी वर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टाइट सिचुएशन, and that drove Okay. all the downgrades, and it almost continued till Q2 of FY26। तो वो 4 क्वार्टर तक Okay. डाउनग्रेड्स की कहानी चलती रही, एंड दैट इज वेयर, तो जब क्वार्टर एंड क्वार्टर डाउनग्रेड होता है और आप एक हाई एक्सपेक्टेशन वाले बेस से आ रहे हो, राइट, कि जहाँ पे प्राइजेस वेयर फैक्टरिंग इन वेरी हाई लेवल ऑफ ग्रोथ, क्योंकि प्री दिस डाउनग्रेड जो वैल्यूएशंस थे उनमें जो बिल्ट इन एक्सपेक्टेशन थी ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा थी। तो उसके कारण बाजार में करेक्शन होना चालू हुआ। सो लार्ज कैप साइड में तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, इनफैक्ट पॉजिटिव रिटर्न था। बट ड्यूरिंग 2025 स्मॉल एंड मिड कैप में करेक्शन हुआ, स्मॉल कैप में स्पेशली हुआ, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन का जो डिसलोकेशन था, राइट, या मिस प्राइसिंग थी ऑन द हायर साइड, दैट वाज टू हाई। तो दैट वाज द की रीजन, दैट इज द बैकड्रॉप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टुडे। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, Okay. Q3 में अभी तक हमने जो नंबर देखे हैं, एक्चुअली नंबर्स आर रीजनेबली गुड। तो वी आर सीइंग अ पॉजिटिव टर्न। सो इट्स अ यू शेप्ड रिकवरी, आई वुड नॉट कॉल इट अ वी शेप रिकवरी। और वो यू शेप में बॉटम वाला पार्ट कितने लंबे चलेगा दैट आई डोंट नो, बट वी आर सीइंग अ डिसेंट रिकवरी। तो अभी क्या क्या चीज़ें हुई हैं और ये जो तीनों फैक्टर थे उसमें कैसे चेंजेस आए, क्योंकि ये फैक्टर निगेटिव होने के कारण हमारे ईपीएस पे निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था। तो अब तीनों फैक्टर को हम फिर से देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज बैक। एक लल हुआ था पोस्ट इलेक्शन, बट उसके बाद ऑन ग्राउंड एक्सपेंडिचर हैज स्टार्टेड। हम लोग नई बिडिंग्स भी देख रहे हैं। तो पिछले 3 से 6 महीनों में वी हैव सीन न्यू टेंडर्स बीइंग बिडेड आउट, न्यू वर्क हैपनिंग। इनफैक्ट जो फर्स्ट राउंड ऑफ सेमीकंडक्टर साइड की जो पीएलआई और डीएलआई हुआ था उसमें एक्चुअली काफ़ी टाइम बेस्ड काम हुआ। तो 2-3 फैक्ट्रियाँ एक्चुअली इज़ ऑलमोस्ट रेडी, और बाकी भी एक आध दो फैक्ट्रीज काफ़ी अच्छे एडवांस स्टेज पे चल रही हैं। सो नाउ स्लोली द एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो कमिंग बैक, प्लस गवर्नमेंट ने बजट में भी अच्छे एलोकेशन किए हैं। तो Okay. बिकॉज नाउ अब ऐसा है ना कि जैसे लोग कई इस बात पे बहस करते हैं कि देखिए केवल इतने परसेंट ग्रोथ हुई। इन माई ओपिनियन अब परसेंटेज ग्रोथ से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली exactly ग्राउंड पे कितना एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, राइट। आप नंबर तो 25% ग्रोथ का लिख सकते हैं बजट में, लेट से कि 12.25 लाख करोड़ की जगह आपने 15 लाख करोड़ लिख दिया, बट हाउ मच यू आर एक्चुअली एबल टू एग्जीक्यूट ऑन ग्राउंड, दैट मैटर्स मोर देन व्हाट वी आर पुटिंग इन बजट। सो आई थिंक दैट विल नाउ स्टार्ट, बिकॉज बीच में एक आध दो स्टेट इलेक्शन थे, वो भी नाउ वी आर बिहाइंड दैट। द another thing is that this time the top three areas are defense, railways and roads, right? तो roads में there was a lull in tendering out because of some reason or other. Some tenders were cancelled, etc. But now we are seeing a lot of tendering happening. In fact, there could be a very bunch up of tender opening in next 3 to 6 months by NHAI. Railway work is being done properly. Of course, the speed is slow as compared to जो हमारा expectation है कि और fast काम होना चाहिए. But it's more distributed. So I think it is being done now at a reasonably good speed. On defense, the good thing is
इंक्रीमेंटली, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इज दैट हमारा जो कैपेक्स है उसका लोकल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है। अभी तक के कैपेक्स में वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक कंपोनेंट आउटसाइड इम्पोर्ट्स का होता था। तो जब आपके पास इम्पोर्ट होता है तो आपका उसका लोकल मल्टीप्लायर नहीं इम्पैक्ट दिखता, राइट, बिकॉज यू आर बाइंग द होल इक्विपमेंट। बट नाउ इंक्रीमेंटली लोकल कंपोनेंट इज इंक्रीजिंग इन द कैपेक्स। इस साल तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सेकेंड थिंग इज कि इस कैपेक्स, तो ये कैपेक्स गवर्नमेंट कैश अकाउंटिंग पे काम करती है। तो ये जो इस साल कैपेक्स होगा इसका ऑर्डरिंग बहुत पहले हो चुका था। अब आप उसको एक्चुअली उसके लिए पे करेंगे या एडवांस पहले दिया होता तो बैलेंस अमाउंट पे करेंगे और आप उसकी एक्चुअल परचेस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में। बट जो नई ऑर्डरिंग हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट अब लोकल है। तो वो जो कैपेक्स है वो अगले 3 से 4 सालों में आना शुरू हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। The second, so this is on government capex. One problem was export, कि वो एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो ऑफ कोर्स वी हैव गॉट हिट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा बेस लेवल एक एक्सपोर्ट चल रहा है बट जो उसमें ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। तो ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन हैज़ बीन इन टर्मोइल फॉर लास्ट 1 to 2 years। डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट उसके बावजूद आई थिंक वी हैव मेंटेन्ड द बेस नंबर, and we have not degrown materially if you look at almost 12 to 24 months। And now हमारी EU के साथ डील हो गई है, मे बी इन नेक्स्ट 9 to 12 months वो ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी वंस द पेपर वर्क इज डन। वी हैव डन द US डील। तो इससे जो एक ओवरहैंग था सबके दिमाग में, राइट, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सपोज कीजिए किसी एक अमेरिकन बायर का इंडिया में एक सप्लायर है, अब टैरिफ लग गया है, उसको नहीं पता कि मेरे को क्या करना है, तो वो बात ही नहीं करेगा आपसे, राइट। वो ये बोलेगा कि ठीक है यार मैं देखूंगा, कुछ सॉल्व हो जाएगा तब। एंड दीज सप्लाई चेन्स आर कॉम्प्लेक्स। तो ऐसा नहीं होता कि आप बहुत आसानी से उसको स्विच कर सकते हो। ही विल गो टू सम अदर सप्लायर हु इज मोर बेनिफिशियल फॉर हिम नेचुरली। बट नाउ दीज डिस्कशंस विल स्टार्ट, राइट, कि हाँ ठीक है, चूंकि आपका ये टैरिफ कभी ना कभी अगले 1 से 6 महीने के अंदर जब भी पेपर वर्क कंप्लीट होगा वी विल हैव इट ऑन ग्राउंड। सो नाउ वी कैन हैव अ कंटिन्यूटी विथ यू। सो नाउ लेट्स गो ahead and negotiate। तो in export I am quite positive, and especially on the engineering export side, because यूएस को, यूएस में एक चीज तो हो रही है कि उनको डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब, राइट, बिकॉज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारी चीजें लगती हैं और वो लोकल नहीं बनाते क्योंकि वहां तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो गई है। दे डू वेरी हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, राइट, एंड वी वर सीइंग दैट कि लोग यहाँ आके बात करने की कोशिश कर रहे थे। आपको टैरिफ के कारण प्रॉब्लम हुआ। तो आई थिंक दैट विल ड्राइव लॉट ऑफ अर्निंग ग्रोथ फॉर लॉट ऑफ सप्लायर्स आउट ऑफ इंडिया ऑन द इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट साइड, एंड whomsoever we meet, the overhang was exports, otherwise अपॉर्चुनिटी वाली कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी। सो दैट इज नाउ गोइंग टू इम्प्रूव एंड स्टार्ट अगेन। जो ऑनगोइंग बिजनेस था जिन पे इम्पैक्ट पड़ा था आई थिंक दे विल रिकवर फास्टर एंड देयर अपग्रेड्स विल बी फास्टर। And export market is also better margin business for a lot of these engineering companies. So that's on the export side. Now we will see a positive delta going ahead. And the third thing was your general consumer sentiment, which got impacted because of all this. तो जो जनवरी में अभी तक ऑटो के नंबर आए हैं पैसेंजर व्हीकल्स के और टू व्हीलर्स के भी, दे आर होल्डिंग अप वेल, राइट। सो ग्रोथ इज देयर। एंड सो जो जीएसटी कट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने पिछले साल जो इनकम टैक्स में एक बेनिफिट दिया था अप टू 12 लाख रुपीज़, एंड प्लस इंटरेस्ट रेट कट हुए पिछले 12 महीनों में, तो उसके कारण कंज्यूमर सेंटिमेंट में भी एक इम्प्रूवमेंट आया है, राइट। तो विथ ऑल दिस, ये जो 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे जिसके कारण हमारा एक डाउनग्रेड प्रोसेस शुरू हुआ था, आई थिंक एट द मार्जिन ये तीनों फैक्टर पॉजिटिवली टर्न हो रहे हैं। एंड प्लस नाउ वैल्यूएशन इज इन योर फेवर। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं क्योंकि आप एक साल से लगभग परफॉर्मेंस डाउन साइड देख रहे हैं स्टॉक उसमें। तो स्पेशली ऑन द स्मॉल कैप साइड एंड मिड कैप साइड, मोर इन स्मॉल कैप देन मिड कैप्स, आई थिंक नाउ वैल्यूएशंस आर मच मोर फेवरेबल। तो दिस इज माई कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट। सो आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज व्हाट टू बाई रेदर देन टू थिंक कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या मुझे बेच देना चाहिए। सो दैट माइंडसेट जो हमको 6 महीने पहले या 9 महीने पहले लगता था कि यार कहाँ पे डर है
कि यहाँ पे और डाउनग्रेड हो सकता है, मल्टीपल और कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ पे शुड वी गो अहेड एंड सेल द स्टॉक। नाउ आवर मोस्ट ऑफ द टाइम गोस कि कहाँ पे वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव हो गया है कि हमको ये स्टॉक देखना चाहिए, लेना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केट फॉर मी। Okay, great. Thank you for that. So, as you have summarized, it was a factor of three things, which is export-led pressure, which is certain pause or momentary realization of the order book जो government capex के through हमको आना चाहिए था. तीसरा, consumer sentiments because of all the nuisance and hue and cry जो हमको देखने को मिला है. And now, hopefully, we are seeing a U-curve recovery when we talk about the earnings cycle. Lastly, you rightly touched upon the valuations also, क्योंकि जैसे ही हम earnings की बात करते हैं, naturally the second question that comes to mind is valuations. Although you have briefly touched on that, but मेरी understanding के according right valuation judge करना एक retail investor के लिए हमेशा बहुत यस, tough होता है. So if you have to highlight if the current markets in your opinion are undervalued, overvalued, or selectively we have to see the valuation, if you have to throw some more light on that, how would you श्योर श्योर। describe that? तो जो आपने कहा ना कि वैल्यूएशन रिटेल इन्वेस्टर के लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए भी सबसे डिफिकल्ट जॉब वही है। कंपनी का बिजनेस एनालाइज करना, उसके बारे में समझना इज एक्चुअली द इजीएस्ट जॉब, राइट? एनीबडी कैन डू इट, बिकॉज अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप चैट जीपीटी वगैरह है तो आपको सब पता चल जाता है। बट हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, हाउ टू थिंक ऑफ इट्स बिजनेस साइकिल, how to think about it in terms of sustainability of earnings, ROEs, that's the real challenge. And eventually to think कि, और वैल्यूएशन देखिए क्या होता है ना, मार्केट कलेक्टिवली तय करता है। आप कोई एक आदमी तो वैल्यूएशन तय नहीं करता है कि इसका वैल्यूएशन ये होना चाहिए, एंड कलेक्टिव True. विजडम ऑफ मार्केट अंत में वही सही होती है, राइट? तो हाँ, Market. तो यू कैन नॉट चैलेंज इट बियॉन्ड द पॉइंट, एंड जनरली आई हैव सीन कलेक्टिव विजडम ऑफ मार्केट इज राइट, because market is full of intelligent people. It's of course, and the people who have higher value share, they are extremely intelligent people. नंबर में रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है बट उनका वैल्यू शेयर थोड़ा कम हो जाता है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आई थिंक नाउ वैल्यूएशंस आर मोस्ट अट्रैक्टिव ऑन स्मॉल कैप साइड, आई वुड से Okay. लीस्ट अट्रैक्टिव ऑन मिड कैप साइड, एंड समवेयर ओके अराउंड इन सम लार्ज कैप्स, बट लार्ज कैप्स में मेरे हिसाब से बहुत सस्ते नहीं है if you think of in terms of their growth prospects, sustainability of earnings and ROEs, तो लार्ज कैप के भी अपने यूनिक चैलेंजेस हैं कि सबकी साइज बड़ी हो गई है, right? So for example, IT sector is grappling with this whole AI challenge, and we have seen yesterday that news has came in, right? And there is an impact. Correct. If you look at automotive business, there is a competition challenge because competition is increasing. Uh, if you look at banks, competition is increasing because everybody is now happy. Everybody has good balance sheets. गवर्नमेंट जो पहले एक 10 साल तक पीएसयू बैंक्स की बैलेंस शीट खराब थी और वो एग्रेसिव नहीं थे लेंडिंग में, अब वो भी एग्रेसिव हो गए हैं क्योंकि उनकी सबकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी हो गई है, देयर एनपीएस हैव गॉन डाउन। तो इफ यू लुक एट अक्रॉस लार्ज कैप्स, एनी सेक्टर यू लुक एट एक्सेप्ट लाइक बेस कमोडिटीज जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है, बट वहाँ पे चाइनीज कंपटीशन है फिर, जैसे स्टील वगैरह में चाइनीज कंपटीशन, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट कंपनीज बिकॉज चाइना इज डंपिंग, बट तो लार्ज कैप में भी ये कहना कि इट इज वेरी चीप, इन माय ओपिनियन इट इज नॉट राइट। और हमको ये समझना पड़ेगा कि गोइंग अहेड इंडिया में कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, सो ऑल दीज लार्ज कैप्स विल हैव मोर चैलेंजर्स टू फेस। पिछले 10-15 सालों में जो हमने एक चीज नहीं देखी है वो है कि बहुत सारे लार्ज कैप्स को कभी कोई कंपटीशन ही नहीं हुआ, because given their size of their balance sheet, their market share, it was very difficult for anyone to create a meaningful dent on their business, because nobody had capital, nobody had talent, right? क्योंकि आपको अभी किसी बड़ी कंज्यूमर कंपनी को चैलेंज करना है तो यू नीड लॉट ऑफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ एंड गुड टैलेंट, राइट? बट नाउ वी आर सीइंग दैट इट्स हैपनिंग, एंड प्लस आरओईज वगैरह इतने अच्छे थे, कैश फ्लो इतने अच्छे थे कि बड़ा कंपटीशन भी आ रहा है, जैसे हमने पेंट सेक्टर में देखा है, राइट? पेंट सेक्टर इज गोइंग थ्रू मैसिव कंपटीशन फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। तो ऐसा नहीं कि पेंट में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द कंपटीशन कंपनीज आर सफरिंग एंड देयर इज अ मार्जिन प्रेशर। सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इन लार्ज कैप्स, और हमने पिछले 15-20 सालों में जब भी लार्ज कैप्स को वैल्यू किया है तो हमने ये फेस कभी नहीं देखा है कि इन कंपनीज को मैसिव कंपटीशन हुआ है। You look at automotive business, so there used to be clearly a market leader in entry level cars and is
बिकॉज एंट्री लेवल कार का मार्केट शेयर इंडिया में बहुत ज़्यादा था, तो corollary to that was कि that player had very high market share. Now suddenly that market is not growing. What is growing is premium products, और premium product में there is massive competition. So the difference between market share of entry level cars and premium cars for the same player is huge, right? So we have to understand this key. This dynamics for large caps may change materially, and then relative growth, relative improvement in ROE, etc., can be lower as compared to, let's say, other market. But of course, चूंकि ये बड़ी stable companies हैं, इनमें predictability बहुत है, because you know their history for last 15-20 years, so there is a confidence on them, and that confidence prevents massive derating. So even in the companies where we have seen that earnings have stagnated, de-rating उस लेवल का नहीं होता है. अगर वही अर्निंग स्टैग्नेशन स्मॉल कैप में होता है तो क्या होता है, राइट? इन अ गुड आरओई लार्ज कैप कंपनी, अगर अर्निंग स्टैग्नेंट हो जाए, अच्छा कैश फ्लो जनरेट होती है, तो भी उसका पी 30 to 40 रह सकता है. It maintains that level of P with good market share. If same thing happens in a small cap, earning stagnation, etc., reasonably, let's say 15-20% ROE, आप उसका P 10 कर देंगे, because the confidence is not there, right? You start thinking about survivability, etc. So that difference is there, and because of that, large caps are holding up. And of course, in relative positioning, people are buying more large caps in last 1 year rather than mid and a small cap. So I think from that perspective, valuation is maximum attractive on a small cap side. वहाँ पे डिसबिलीव भी ज़्यादा है, तो मिस प्राइसिंग ज़्यादा है, सेल ऑफ भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है, एंड एट द मार्जिन बिजनेस इज इम्प्रूविंग. तो थियोरेटिकल सेंस में अगर आप बोले पूछें कि कोविड टाइम के वैल्यूएशन आ गए हैं क्या, या प्री कोविड आ गए हैं, तो नहीं आए हैं, राइट? बट उसका कारण ये है कि आरओईज हैव इम्प्रूव्ड, बैलेंस शीट्स हैव इम्प्रूव्ड. प्री कोविड जो लीवरेज सिचुएशन थी स्मॉल कैप कंपनीज की, अब उससे थोड़ा फर्क है, बेटर ऑफ है, राइट? सो दोज आर द रीजन. सो आई थिंक मिड कैप्स I still don't see great value. Large caps, in my personal opinion, are expensive. Small caps, in my opinion, are now attractive. Fair enough. So you very beautifully summarized and introduced another angle apart from introducing valuation at market cap level कि कैसे small caps के लिए now there is greater opportunities to even compete with the likes of large caps. So that was a great insight. Thank you for that. But just to build on top of it, although हमने market cap level पे तो valuations की बात करी, but is there any segment or pocket of the market where you think that pocket is also very fairly valued apart from market caps level? I may not be, because small cap में actually क्या पॉकेट्स पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल काम है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वेयर देयर वाज टू मच ऑफ होप एंड देन अर्निंग्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस धीरे धीरे आ रही है. That part is actually getting Okay. better. And small cap में we have to keep one thing in mind. 250 कंपनियों का इंडेक्स है, और उसके भी बियॉन्ड जो है वो सब स्मॉल कैप ही है, राइट? हर कंपनी अच्छी नहीं होती, देर आर वेरी फ्यू कंपनीज. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज. सो इन्वेस्टर्स हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंटली, एवरी स्मॉल कैप कैन नॉट स्केल अप. तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं या 250 कंपनियों में पैसा लगा देते हैं और हमारे पैसे बन जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नो. बिकॉज टू स्केल अप अ स्मॉल बिजनेस टू अ मिड कैप लेवल, अ लार्ज कैप लेवल, इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. एंड इट्स नॉट जस्ट साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, राइट? तो स्टोरी कैसे बनाते हैं लोग कि देखिए ये एक छोटी कंपनी है, जो भी है 200-500 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है, और इसमें बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, तो ये कंपनी अच्छा करेगी, आप इसका शेयर खरीद लेते हैं या कुछ भी करते हैं. Typical या playbook that we hear. तो ये जो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी का नोशन है ना, ये हॉरिबली रॉन्ग है, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन डजंट हैपन बिकॉज ऑफ साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी. टू गिव यू पर्सपेक्टिव, इंडिया में शूज का सबसे बड़ा साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, राइट? बिकॉज 150 करोड़ लोग हैं, हर कोई ना कोई शूज तो पहनता है. Industry size, and it is a recurring purchase, right? Because you change your shoes in 1 year, maybe 2 year, 6 months, etc., and you want to own multiple number of shoes, right? As per capita income grows, तो आप दौड़ने के लिए, वॉक करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, सबके लिए आपके पास एक अलग जूता होता है. But which shoe company has created massive value? None. If you look at last 20-25 years, the one industry which has created massive revenue is construction industry, right? क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है इंडिया में, तो जो ईपीसी कंपनीज होती हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं,
तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नॉट अ रिलेवेंट मैट्रिक टू अंडरस्टैंड कि इस स्टॉक में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा. इट्स इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट. मोस्ट रिलेवेंट पॉइंट इज कि हु विल डू अ गुड प्रॉफिटेबल एग्जीक्यूशन with good ROEs. That drives value creation. Right? तो स्मॉल कैप में ये जो एग्जीक्यूशन वाली प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज छोटी कंपनियों को, ज़्यादातर कंपनीज के मैनेजमेंट को, प्रमोटर्स को ये सीखने में और समझने में कि स्केल अप कैसे करना है. एक आपको रिस्क भी लेना है, अदरवाइज यू विल नॉट ग्रो. आपको जरूरत से ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना, अदरवाइज यू विल गेट किल्ड. So, to scale up a small business is a very, very big challenge. Right? You have to get a lot of things right. Even if the size of opportunity is very big, companies fail. Right? You have to be able to take that calibrated risk where you will create a profitable growth. You have to be able to hire good people because talent is very much required. तो ये हमारी tagline ही है कि talent brings capability, capability brings growth, right? And that is very important. So this thing has to be understood, and then comes valuation. When you start in large caps, you start with valuation. क्योंकि बिजनेस मॉडल, ट्रैक रिकॉर्ड, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इज ऑल एस्टेब्लिश्ड. राइट, वो मार्केट ने ऑलरेडी सेट करके उसका एक रेंज ऑफ वैल्यूएशन सेट कर दिया है, बिकॉज दैट कंपनी हैज बीन लिस्टेड फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स. तो आपको पता है कि इसका पी लो एंड में इतना जाता है, हाई एंड में इतना जाता है, एंड यू कैन इजिली कोरिलेट इट विद द ईपीएस ग्रोथ. राइट, अगर इसका ईपीएस ग्रोथ इतना होता है तो मैक्सिमम पी इतना मिलता है, अगर इसका ईपीएस ग्रोथ कम हो जाता है तो मिनिमम पी इतना हो जाता है. राइट, दिस इज द रेंज. सो यू नो कि वेयर मार्केट वैल्यूज द capability, or let's say the standing of the company or quality of the company. In small caps, that never happens, right? Because there is no history. So you have to assess very, very carefully, and that is where assessing capability becomes important. और वही valuation eventually drive करता है. तो in small caps, valuation is a secondary parameter. Capability and quality of the company is first parameter. Size of opportunity is irrelevant. Because every good small cap promoter or management improves his TAM over next, let's say, 5 year, 10 year or 20 years. तो आज ऐसी बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जो 10-15 साल पहले जो प्रोडक्ट करती थी, आज उससे 4-5 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं. गुड प्रमोटर्स. राइट, तो आज अगर हम जब ये सोचते हैं कि ये टाइम है, तो वो टाइम बहुत डायनामिक चीज़ है. राइट, तो इसलिए एंड दैट इज वेयर द चैलेंज कम्स. तो दिस इज हाउ वी थिंक अबाउट इट, एंड आई थिंक इन्वेस्टर शुड ऑल्सो थिंक अबाउट इट. एंड दैट इज वाई वैल्यूएशन बिकम्स वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब, वेरी डेलिकेट थिंग, एंड मैक्सिमम मिस्टेक्स आर मेड. हम लोग भी गलतियां करते हैं. इट्स नॉट दैट वी डोंट मेक मिस्टेक्स, वी ऑल्सो लर्न एवरी डे टू say to see ki what is the right valuation for a company. And it's also very contextual what context you are valuing a company. So to answer your question, is there any specific pocket? I think जहाँ पे सबसे ज़्यादा disappointment हुए हैं, those are decent pockets. But there are also pockets where valuations are not actually very very cheap, but earning traction is very good. तो ऐसा नहीं कि सारे स्मॉल कैप में ही ग्रोथ खत्म हो गई है. देर आर सम स्मॉल कैप्स व्हिच आर ग्रोइंग एट 20%, 25%. And I think there is potential for even now more re-rating, because if we have a good deal with EU, we have a good deal with US, so the sustainability of growth beyond next 2-3 years is now much more certain as compared to what it was 6 months or 1 year ago. Fair enough. So, in order for me to summarize again this particular bit, when we talk about small caps, although market size is important, but उसको सिर्फ एक predominant या एक बहुत ही important factor जैसे नहीं use कर सकते हैं, because it keeps on changing as and when company evolves. Small caps के लिए right execution, scaling up the business is more important. और जो हम general hit और miss ratio की बात करते हैं, not every small cap become a large cap and mid cap, and you have to be cautious of that. So great. So at the same time, जहाँ पर markets अभी सिर्फ earnings and valuations को adjust कर रहे थे, रिसेंटली हाल ही में एक और हमारे लिए एक मेजर इवेंट हुआ है विच इज बजट. सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं इक्विटी मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से पूछूं, तो आपके हिसाब से व्हाट आर दी थिंग्स जो बजट में आपको सबसे अच्छी लगी, और मे बी व्हाट आर दी थिंग्स वेयर यू थिंक शायद बजट और बेटर हो सकता था. या सो आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ थी बजट में वो ये थी कि द होल स्ट्रक्चर, द होल अप्रोच. कि जनरली क्या होता है, चूंकि हमारे देश में हिस्ट्री ऐसी रही है कि थोड़ा सरकार माई बाप टाइप का रोल करती है ना, तो फादर फिगर कि वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एवरीथिंग. सो गवर्नमेंट हैव
एंड जनरली गवर्नमेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू ओवरडू थिंग्स, है ना, कि जब उनको मदद नहीं करनी चाहिए तो भी मदद करने आ जाते हैं, या कुछ डर जाते हैं। इन 2009 द वे वी इंक्रीज अवर फिजिकल डेफिसिट, और उसके कारण इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि फिर वो 3-4 साल तक का चैलेंज हो गया। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन द बजट वॉज दैट गवर्नमेंट वॉज वेरी रिस्ट्रेन्ड इन एवरीथिंग। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइटनिंग नहीं की। पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी कमिटेड टू फिजिकल कंसोलिडेशन, और उसका भी एक असर पड़ा है हमारी ग्रोथ रेट पे। सो दे हैव नॉट अबेंडेंड इट, बट उन्होंने ग्रोथ को भी सपोर्ट किया। एट द सेम टाइम, दो देयर आर अनसर्टेनिटीज, दो देयर आर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, गवर्नमेंट ने ये भी नहीं बोला कि देखो ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हम ही है और कोई नहीं है, तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ा दो। Right, so both these approaches for me were very very good, because macro stability is very important for good equity returns, right? So I think that focus of the government to ensure that we remain in a predictable and stable path without undoing anything, without overdoing anything, is the best thing in the budget, right? So boring budget is a good budget for us, कि आपको पता है कि ये चीज़ें इतनी ही मूव होने वाली हैं, राइट? इससे ज़्यादा नहीं होंगी, इससे कम नहीं होंगी। दे हैव फोकस्ड। Continuity, stability gives a lot of करेक्ट, करेक्ट। confidence. सो दे हैव सपोर्टेड ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने कैपेक्स अच्छा रखा है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें भी एक रीजनेबल ग्रोथ रखी है, जो आपके ओवरऑल बारोइंग सिचुएशन को कंट्रोल में रखे। एंड दे हैव सपोर्टेड राइट सेक्टर्स इन द बजट। एंड अगर आप उनकी स्पीच सुने तो स्पीच में शी स्टार्टेड, द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टार्टेड विथ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग 6 सेक्टर्स, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जैसे सेमीकंडक्टर में या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा काम हुआ है पिछले 2-3 सालों में, वेयर वेयर गवर्नमेंट हैज फोकस। सो नाउ लर्निंग दैट थिंग, learnings from that, and expanding this now to 6 sectors, आई थिंक एग्जीक्यूशन कैन बी फास्टर। ऑफकोर्स ये सारे सेक्टर थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इट कैन बी चैलेंजिंग, बट स्टिल आई थिंक नाउ देर इज अ लर्निंग। तो द फर्स्ट थिंग वॉज predictability and stability, uh, supporting both growth as well as fiscal consolidation. Number two was focus on right sectors and businesses, and especially on the manufacturing side. सर्विसेज साइड को भी ऐसा नहीं कि उन्होंने इग्नोर किया, दे गेव गुड टैक्स बेनिफिट टू डेटा सेंटर्स एटसेट्रा। एंड द थर्ड थिंग वाज दैट देयर वाज नो टू मच ऑफ प्लेइंग अराउंड विथ ब्रॉड स्ट्रक्चर द वे गवर्नमेंट वांट टू फंक्शन। तो अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखिए तो एक बेसिक थॉट प्रोसेस गवर्नमेंट ने कर लिया कि हमको ये करना है, ऐसे स्पेंड करना है, ये करना है, इन चीज़ों को सपोर्ट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई थिंक दैट कंटिन्यूटी इज देयर, राइट? सो टैक्स रेट्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, एटसेट्रा। सो आई थिंक दैट्स एंड डीरेगुलेशन ऑन एवरीथिंग। सो नाउ द गुड थिंग इज दैट गवर्नमेंट, तो बजट में भी उन्होंने डीरेगुलेशन की काफ़ी बात की। एंड whomsoever you meet in the government, they keep on talking about this. And हम जो कहते हैं ना बुली पल्पिट, so this is very important that what people sitting at top are talking about. And this deregulation is a very common theme, and I think that will benefit most of the businesses. So I think these three things were the key takeaway for me. Positive things. I think what I didn't like, actually there was nothing, because given the financial situation of the country and government, most numbers are predictable, right? Okay, this is the range where they can move around. uh, I think what now we need to see is execution. So budget is just an intent and document, right? It's just an allocation. I think the what I would not like is कि अगर execution time पे नहीं होता है, because we have seen in history that execution has not been on time. Of course, Correct. like as I said, semiconductor, etc., the execution has been very very good, pretty fast, uh, both side, on the electronics manufacturing side as well as on the semiconductor side, execution has been very fast. So hopefully this time again execution will be on time. Okay. So if I just have to summarize it quickly for retail audience, हर बार बजट को ह्यूज हेडलाइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है. Sometimes stability and enough confidence on the existing policies just do the job right. So yeah, thank you for that. Interestingly, in your note, you also mentioned about government capex and the structural reforms that government has announced, especially in the manufacturing side.
Now, if I have to just drill down, मेरे को अगर इसी को थोड़ा और expand करना है, how do you think this is going to impact India's growth trajectory vis-a-vis capital markets as well? Any parallels that you can draw maybe with us and other countries who have followed this path? So actually parallel draw करना बड़ा मुश्किल है because nobody has done what we are trying to do, our size and our kind of population and the kind of democracy that we have, right? तो इकोनॉमी आइसोलेशन में नहीं होती ना, इट हैज इस सोशियो पॉलिटिकल एंगल टू इट एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. Correct. तो देखिए जो गवर्नमेंट कैपेक्स आई थिंक इट्स इन अ फैंटास्टिक डायरेक्शन. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the relevance of this capex and it is related to manufacturing. तो we have to discuss actually manufacturing also and हम सर्विसेज में इतना अच्छा क्यों कर पाए, हमारी कैपेबिलिटी, इवन दो सर्विसेज रिक्वायर मच मोर कैपेबिलिटी देन मैन्युफैक्चरिंग, राइट. क्यों मैन्युफैक्चरिंग में आप डिजाइन विजाइन इन लाइसेंस कर सकते हैं एटसेट्रा, सर्विसेज में नहीं कर सकते. यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन बिकॉज ऑफ अ रीजन ऑफ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था. सो चाइना वेंट अहेड ऑफ अस बिकॉज उन लोगों ने हमसे पहले एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया. एंड दैट इज वेयर गवर्नमेंट कैपेक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो हमने जब 2001 के आसपास जब ये मॉडल शुरू किया कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है एंड NHAI स्टार्टेड ऑल दिस BOT and BO kind of programs, toll based road construction. Then initial thought was that private sector will be able to fill in the money required for capex, infrastructure capex. But post global financial crisis we realized कि ये difficult proposition है, ऐसा नहीं हो पाएगा, right? Because these are long term commitments and availability of that kind of long term capital is a questionable thing for us. And private sector may have maybe running too much of risk, and at some point of time it converts into systematic risk. So then government is stepped in and post COVID वो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़े. But it is very very important बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली पहला प्री रिक्विजिट है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना. रेस्ट एवरीथिंग कैन बी अरेंज वेरी क्विकली, राइट, बट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी हैव बिल्ट अ बेस लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बट इट इज स्टिल 4 out of 10, right? Because हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा इज नॉट दैट ग्रेट. Railway network etc has improved, but it's not like 8 out of 10 or 9 out of 10. It's still like 6 7 out of 10, right? तो उसमें जो तो कैपेक्स के अलावा जो गवर्नमेंट ने एक बड़ी अच्छी चीज की, दैट इज कॉल्ड सिटी इकोनॉमिक सेंटर्स एंड रीजन्स, CER what they have said. I think it's the greatest thing that we are going to see, right? Because इंडिया में जो टॉप सिटीज हैं, लेट्स से आप दिल्ली देखिए, बैंगलोर देखिए या बॉम्बे देखिए, दे हैव ऑल इवॉल्व्ड अराउंड सर्विस इकोनॉमी, जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज वैल्यू एड इज हायर. बट अनफॉर्चुनेटली अ सर्विस बेस्ड सिटी कैन नॉट सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग के लिए यू नीड मोर अफोर्डेबल सिटीज एंड यू कैन नॉट वर्क मैन्युफैक्चरिंग इन एन एक्सपेंसिव सिटी. And that is why the whole transition of manufacturing from west to east happened, right? Because per capita income बढ़ गया. So Bangalore per capita income is very high. Now that per capita income cannot support manufacturing. It's nearly impossible. So we need cities specifically designed for manufacturing, and we have to build that infra, right? So we need to have a very good Rajkot or Baroda kind of place, right? Or let's say near Ahmedabad, all those places, Surat, which have very good infra, like let's say Delhi, Bombay. Of course, Delhi, Bombay, Bangalore का भी infra खराब है अभी. So, but we need that so that they can attract good people, good companies, etc. And I think that discussion, that thought process, that understanding from the government side is very, very important from that capex side. Now let's understand a bit on manufacturing. So first thing is that capex for government is very, very important, and they are focusing on right sectors. Key railways, roads, and defense. All three are important. Why? Because logistics is a very important cost. Right? It's like 10-12% for the any manufacturing company from if you take from both sides. And if you have poor logistics, not so great logistics system, then that cost goes up, and it matters. Especially in export market it matters, because in export market केवल cost ही नहीं, आपकी reliability is also a very important factor. Because a person sitting in US ordering continuously, he wants just in time delivery, right? Or he wants very low level of inventory in the transit. So for that your system has to be really efficient.
So we need great logistic system, and for that we need great infrastructure. So I think that focus is very very good. Now, how it helps manufacturing? So if you look at what is manufacturing, right? So broadly, manufacturing has these components. Some of the largest component of manufacturing. The first one is defense. Across the globe, अगर आप जाएंगे देखेंगे किसी भी country में, so defense manufacturing forms part of very large proportion of manufacturing, overall manufacturing setup. The second big that has become is electronics, because the whole world is using electronics, etc. devices. So all the electronics kind of manufacturing. You can include it as part of industrial manufacturing, machines, etc. The third one is transportation, because population need transportation, goods need transportation. So transportation becomes very very large in terms of proportion of manufacturing. And the fourth one is Okay. industrial manufacturing, or what we call is when you build plant and machinery, etc. The kind of things you use them there, we call it industrial manufacturing. So a lot of machines, etc. Now this industrial manufacturing is actually dependent on these three, other three. So your transportation, defense, and electronics and other durables, etc. इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अभी भी कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है, बिकॉज वी वेर इम्पोर्टिंग, right? For a long period of time, our main stay of defense equipments were all imported. We have just started it in last 4 5 years. Okay, so it's just building up, and over a period of time, तो दो चीज़ें होंगी इसमें, एक कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लोकलाइज करेंगे, so the local production proportion will go up, and government is hell bent on that to improve localization. Number two, as our GDP grows, the amount that is available for us to be spent on defense, etc., that will increase. So there is a large domestic market that we will create. So one set of manufacturing यहाँ से आएगा. The second large is your electronics and other consumer goods, etc. So that we have started, right? So now we do very large amount of mobile assembly, etc. We have started doing TV assemblies, and this will grow over a period of time. Now we are getting into semiconductors, packaging of semiconductor, etc. Now people may say कि इसमें वैल्यू ऐड नहीं है, राइट? लाइक क्या मोबाइल असेंबल करने में व्हाट इज द वैल्यू ऐड? बट it starts like that. You always first start with easy things, which you can do with low skilled workers, and then as your scale builds up, as your volumes build up, you move ahead to high value added things, right? So eventually we will go there. That's not an issue. Anyway, we do a lot of chip designing, etc. in India, even for foreign companies. So that's value added is there in the system. The second, another part of the manufacturing is transportation, right? And transportation, maybe other than passenger vehicles and commercial vehicles, virtually we had nothing in India, because हमारा रेलवेज में जो मैन्युफैक्चरिंग होता था वो बहुत लिमिटेड था, बिकॉज बजट्स वेयर लिमिटेड, एंड वी डोंट डू एनी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट्स एटसेट्रा. तो ट्रांसपोर्टेशन में आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, शिप्स हैं, और सरफेस ट्रांसपोर्ट है, राइट? रेलवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट वी वर डूइंग, railway transport we were not doing. Now we have started doing. So we are doing semi high speed trains, we are doing high speed trains, we have changed. So वंदे भारत वगैरह जैसी चीज़ें आ रही हैं. तो as this money kitty available for improving or uh, uh, let's say redesigning the whole network comes. So first we are building the network, and then we will come to other systems in railways. So I think their work is happening, and government has allocated very large sum for that in railways. सो दैट्स वेरी गुड थिंग, एंड दैट विल ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर आप जब तक उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग कभी डेवलप नहीं होगी. देन यू कम इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, राइट? Industrial manufacturing is predominantly your power and other industrial goods like steel based commodities, etc. There we have still have a challenge because China is a big competition, and power में actually एक structural change हो गया है कि we have moved from away from thermal power generation to solar. और सोलार में कैपेक्स इंटेंसिटी कम होती है, एंड प्लस सोलार भी इम्पोर्ट स्टिल, बट गवर्नमेंट इज इवन ट्राइंग टू change that, and they have given a lot of incentive to localize the cell production, etc. But we predominantly import from China, but slowly it will change. So all these things that government is doing is actually going to support manufacturing, and as we build a basic threshold or size for the domestic, we will be able to have better capital, more capacity for exports, right? So it's very important for us to understand the linkage between two and appreciate what government is trying to do in terms of capex.
Now, of course, a lot of people ask this question कि private capex नहीं हो रहा है, right? And I am of the opinion कि private capex हो रहा है. It's a it's a wrong notion that capex is not happening. We have to understand that because services in India are a higher percentage of GDP and they are growing faster, because our per capita income is growing, and plus we have a competition like China which is supplying us a lot of manufactured goods. So our, and plus our infrastructure is still not of a very high quality, right? So we will have a slow growth in capex. We cannot have like 30-40% or even 20-25% growth in capex, private capex in India. It's not possible, right? It may happen less 8-10 year down the line, but अभी नहीं हो पाएगा. अभी वो slow ही growth होगा, and that is happening. It's not that it's not happening. Secondly, we also have to understand from a perspective कि how world has been going through lot of disturbances over last 2-3 years. So US recession, then Chinese competition, war, right? We have seen two wars in last 3 year, 4 year. Russia war happened, and then Middle East war happened. Then this whole tariff discussion for almost last 1 year, right? November 24th, Mr. Trump came into our life, right? And so it has been more than 1 year, and he has been a big uncertainty since the day one. So all these things impact your long-term decisions, right? And the dislocation of thought process has been massive post Mr. Trump coming in. So I think once that stability comes in, once we built a better infrastructure, etc., we will see decent growth in capex, which is even happening right now. So that's my 2 cents on capex part. So, if I just have to understand it in two simple lines, first, infrastructure has to follow. Once infrastructure will follow, or once we are able to establish the infrastructure, जैसा कि आपने बताया, be it road, railways, networks, be it anything, manufacturing will slowly and gradually will start picking up. Manufacturing also has its own life cycle. So first, we'll have to start with the easy pieces in order to move up the life cycle. But the question that I want to ask you over here is, this part we understood really well. Are जो हमारे investors हैं, are they convinced enough with this narrative? Because the reaction that we saw that day was completely different altogether. So if I just have to understand from that perspective. Yeah, so there are some people who understand it, there are some people who don't believe in it, so that's okay. But if you look at most of the capex oriented stocks, तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीरेटिंग हुआ नहीं है. Whatever price adjustment has happened, it has happened because of EPS downgrades, which has happened. So I accept it. That's very known fact. There has been a slowdown, slower growth, and hence EPS downgrades have happened. Of course, अच्छा infrastructure में क्या है, capex cycle में क्या है कि lot of capex in India or lot of companies that are involved with government capex, and that is slow. We have to accept it. That so building too much of growth, etc., is a dangerous thing. So a lot of investors are concerned, convinced, but yes, there is a disbelief still कि कुछ होगा कि नहीं होगा. Okay. Cool. So we'll try. Uh, Domestic policies से move away करते हैं. As you also mentioned, the moment dearly Trump got announced in our lives and so on and so forth. Even as early as yesterday, we got a recent announcement and big headline news as well for us. जहाँ पर India's reciprocal tariffs are reduced down from 25% to 18%. So आपको क्या लगता है, this reduction, how does it change India's risk perception across the globe? Like what it can mean for us? So it is very big for us because इससे एक बहुत बड़ी uncertainty चली गई, right? कि how our relationship with world largest economy are going to shape. तो एक है political relation etc. That is okay, but at business level, how this relationship is going to shape up was the most important outcome for this trade deal, right? क्योंकि देखिए उनका भी 28-30 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, राइट? सो इट्स ए ह्यूज मार्केट, एंड गिवन द फैक्ट कि देर आर अदर, लेट्स से चाइना इज आउट ऑफ बाउंड फॉर अस, राइट? बिकॉज चाइना में पूरी दुनिया के हिसाब से भी ओवर कैपेसिटी है, नॉट जस्ट फॉर चाइना, बट इवन इफ यू लुक एट होल डिमांड ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव ओवर कैपेसिटी. तो अब फॉर अस इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट, स्पेशली अब जब हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं मार्केट शेयर गेन करने के लिए, राइट? So if I give you broad perspective about data, between 2001 to 2010-11,
हमने अपना ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में मार्केट शेयर ऑलमोस्ट ट्रिपल कर लिया था. So if I remember correctly, I am not like very sharp on the numbers, but I think from 3.5 or 5.4 percentage, it moved to 1.2 or 1.3 percentage points, right? Till 2011. Then for next 10-12 years, it remained stagnant. So global economy grew for almost 10 to 12 years. China gained market share. We couldn't grow our share, but we remained at that level. We are also not lost market share in terms of if you look at that base of 2011, right? Because 2010-11 to 2020 or 22 का कोविड तक हमारे यहाँ बहुत बुरी हालत थी, राइट? बैंक्स में एनपीए हो गए थे, कंपनीज वेर अनसर्टेन, पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई किसी को कैपेक्स नहीं करना था, जिन्होंने कैपेक्स किए थे उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी. Half of the steel sector in India was in bankruptcy courts, right? So it was a very difficult time, and you cannot blame people to do create capacity. And even buyer was not sure about having demand or not. कि वो demand कर पाएगा कि नहीं. And during that time, China created massive capacity. So we need to give it to them that they took that risk, created massive capacity, and gained market share big time. And they offered that capacity at a very competitive rate to the world. और इसीलिए वर्ल्ड शिफ्टेड वेरी क्विकली ओवर देयर. हमारे पास तब उस समय के ड्यूरेशन में कैपिटल ही नहीं थी, राइट? तो यू कुडंट डू एनीथिंग. एंड गवर्नमेंट बैलेंस शीट वाज नॉट दैट ग्रेट, फिजिकल डेफिसिट बिकेम वेरी हाई, तो वी कुड नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम उस समय लीगल केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, कोल को लेके हुआ, पावर को लेके हुआ, टेलीकॉम को लेके हुआ. सो देर वॉज अ बिग काइंड ऑफ पॉलिसी जैम दैट वॉज हैपनिंग. It took us 10 years to solve all those problems, etc. And then we built infrastructure in between. We built good banking system. हमने banking system पूरा clean up किया कि आज availability of capital अच्छी, etc. So now we are ready, right, to start into a journey of gaining market share in export. And during that time आप अपने biggest economy जो world में है उसके साथ आपके economic decisions या इस तरह की एक पॉलिसी का प्रॉब्लम हो जाता है, सो इट कुड हैव बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस सेंटिमेंटली, राइट? वी माइट हैव गॉट, बिकॉज हमारा बेस छोटा है एक्सपोर्ट का, तो हम वो कहीं और मार्केट ढूंढ सकते थे, बट वी कुड हैव लॉस्ट आउट ऑन द ग्रोथ, एंड दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट. So now with confidence, people can sit across the table, discuss, they can do long-term deals. People here in India can make investments, can create capacity कि हाँ हमारे पास एक potential buyer है, right, with whom we can think of having a 10-year, 15-year, 20-year relationship, because now all those policy things have been sorted out. So I think that is very very important rather than कि वो 18% है या 15% है या 20% है. It doesn't matter. At the end of the day, every tax is priced in, right? And buyer has to pay that. Whatever Mr. Trump may say, but eventually every tax is borne by the buyer, right? Not by the seller. So percentage, I think 18, 15, 20 is not a problem. The problem is that clarity, that certainty ki okay, this is what we are going to deal ahead, move ahead and deal with. And I think the what has happened with EU is also great. I am not worried about कि हम क्या open up कर रहे हैं, right? In fact, in my personal opinion, we should open up more. There is no need to be protectionist, right? You cannot protect and ask for market share in other economies, other countries. And now we should believe in our capability. And we are a country of capable people. So why would someone come and gain market share irrespective of quality or capability, right? We can give a nice fight. You look at automotive. Right? Every good large company was there, but Indian companies are thriving, right? They are having good market share. Hyundai is there. So it's not that we cannot do it. You look at two-wheelers. In fact, the largest going companies are actually Indian companies. And it's pure manufacturing, very design led, where we had no background, right? Nobody ever said India makes great automobiles. It was all Japanese and Europeans. But it's our market where we have kind of developed that kind of technology, that process where we can make relevant products at a good quality, at reasonable good price. So we are competing with them. It will happen across the board. So why to bother? Right? In fact, if we get more interaction with foreign industry, so let's say there are more competition, more collaboration. Actually, I believe our companies can go there and gain market share. Right?
We are now the largest exporter of two wheelers in the world. So that thing I think, and when you open up your market, it is, you are given a better welcome in other countries. Right? Let's say if we open market for American companies or European companies, they will open it up for us and they will give us that welcome. What is the issue between China and America right now? कि एक ने मार्केट पूरा खोल रखा है, एक कुछ करने नहीं देता है, right? So that's the problem. So we should not actually be into that situation where we expect someone else to कि वो हमारे लिए अपना मार्केट पूरा एक्सेस खोल दें and we will keep a restrictive access etc, because that may not work. So I think this is a great thing that has happened, both EU deal as well as the US deal thing. And rates, irrespective of that, in spite of whatever rate they set, I think the policy certainty, the direction in which the relationship will go is more important. So all these deal announcement is about right time, right place. जहाँ पर now India, when we are capable enough, our competitiveness, our acceptance about the global products, about the local products that we are manufacturing across globally is increasing day by day. ये कहीं ना कहीं एक फ्लाई व्हील की तरह एड अप हो सकता है हमारे लिए in terms of growth in be it exports, domestic or globally Correct. anywhere. So okay, fair enough. But now if I have to ask this thing that what can all these deals, जो भी ये EU deal की बात हमने करी है, US deal की हमने जो बात करी है, can mean for us in medium to long term, if I have to talk about like वो transition हमको कैसे देखने को मिलेगा? Will it be sooner, later? How will we see that transition happening? No, I think it would be a bit slow, because देखिए क्या है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, नो डाउट अबाउट, बट एज आई सेड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी डजंट मैटर, राइट? इट्स योर कैपेबिलिटी, योर प्रिपेयर्डनेस टू कैप्चर इट, दैट इज व्हाट मैटर्स. तो हमको कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी कि हम उसको सर्विस कर पाएँ. Be it any industry or any kind of demand in EU and US, वो क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी. So that in certain sectors it is there, right? Already people are supplying, so they are aware of all this, they have capacity, like for example textile etc. So we track one engineering company which is predominantly exporting to US and Europe, right? They have upgraded their guidance in every quarter in last 3 quarters, even after tariffs, right? And their margins, both revenue guidance and margin guidance, they have increased, right? So they, जहाँ पे भी preparedness है, जहाँ पे capacity है, I think it will be fast. जहाँ पे capacity build करनी है, वहाँ I think it will be slightly slower. And then once it is opened up, there will be a lot of sectors and businesses जहाँ पे हम अभी involved नहीं है exports में. Right? I think there also will, for example, aerospace. We are one of the largest buyer of aircrafts in the world, right? We would be like in top 5, top 7, because और कोई इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं, कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कहीं पे जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जरूरत पड़े. बट इस पूरी एरोस्पेस इंडस्ट्री के सप्लाई चेन में हम कहीं नहीं है. Our contribution will not be even 1%, right? And it's a huge industry, and it's predominantly European and American. And we have engineering capability. ऐसा तो नहीं है. We make very sophisticated engine parts for Ferrari, Porsche, etc. Those companies are here in India. There is a company which makes actually the cylinders for Ferrari engines. So we have that capability. So it's just that with all this, we will have much more opportunities. Uh, we will be integrated more and more, and we will have much more growth areas where we can create market share and growth. So from retail perspective, if I have to understand it right, हमें readiness और execution capabilities पे focus करना पड़ेगा. जो companies, जो sectors वो execution capability readiness में आगे हैं, there we'll see these transitions और movement happening more quicker. And जैसा कि आपने कहा, जहाँ पर हमारी readiness नहीं है, जहाँ पर capacity building अभी हो रहा है, वहाँ पे probably we'll see a slow Correct. cycle over Correct. there. Great. Great. From that context, before ending this conversation, मैं आपसे दो और important questions पूछना चाहूँगा, जो हमारे retail audience के लिए हमको ऐसा लगता है जानना और समझना बहुत ज़रूरी है. पहला, that जब भी ये ऐसे phases आते हैं, right, कि budget announcements, global headlines, earnings upgrade, downgrade, जो भी ये headline news event आते हैं इतने बड़े-बड़े, what do you think as a retail investors, what common mistakes do you think we do very often in these times or in these headline events that is there?
I think the biggest mistake is to pay attention to them, right? So in long run, आप ऐसे सोचिए कि equity is a long term asset class, right? If you are a trader, Correct. it's very important to keep a watch on every news and every event, because short term में वो it can create impact on price. Becomes करेक्ट. overwhelming. बट इन लॉन्ग रन ये तो इतनी बड़ी दुनिया है, 800 करोड़ लोग हैं, राइट? इस देश में 150 करोड़ लोग हैं, एंड देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक मिस्टर ट्रम्प एटसेट्रा. तो यू विल ऑलवेज हैव समथिंग और अदर गोइंग ऑन. It's not possible to kind of think of your investment in context of these kind of announcement or news and development, right? So you have to focus on relevant things, and the most important thing is you have to ask yourself कि हर साल एक बजट आता है, हर साल एक कुछ ये ऐसा चीजें होती हैं, तो पिछले 10 सालों में इसने हमारी चीजों को कितना असर किया है, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे टू मेक मनी यू हैव टू थिंक बॉटम अप. ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, इसको अच्छे लोग चला रहे हैं कि नहीं, इसमें आरओई अच्छा आएगा कि नहीं, कैश फ्लो अच्छा आएगा कि नहीं, इसका भाव सही है कि नहीं. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सब शॉर्ट टर्म वाले मूवमेंट होते हैं जनरली सबसाइड हो जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट वोलेटिलिटी लुक्स वेरी स्मॉल when you extend your time horizon. And if you are a real investor, by definition, your time horizon would be long, right? So the best thing is to simply ignore all these things. Uh, and second thing is focus on basics. Be disciplined. Uh, be disciplined. Be focused on what is relevant, and always ask question. The second thing is that risk management in investing. So you can do risk management in two ways, right? What we are taught in generally in our training in being as a fund manager, etc. One is the ex ante. When you are entering into a position, you have to keep certain things in mind to manage a risk which can arise in future, right? तो हम जो बोलते हैं ना known unknown, तो we factor for it. And then there is a post facto risk management. कि certain events play out and then you see कि what is the risk, right? And you ask question कि ये structural है कि cyclical है, temporary है, and then you take a call, etc. Most of the outcome, or let's say the positive outcome of risk management, happens when you do ex ante. Post facto risk management जैसा actually कोई चीज नहीं होता है, because if risk plays out very fast, market will also react to it very very fast. You will rarely get opportunity to get over it, right? या be away from it. वो नहीं हो पाता है. वो गैप डाउन ही खुलेगा 10% 20%, तो आप क्या कर लोगे, right? तो you have to think about risk ex ante before you are entering into a position or a trade when you are sizing up in the portfolio. तो जब आप एक्स एंटी ठीक से रिस्क मैनेज कर लेते हैं, यू बिल्ड ऑल द सिनेरियो, सो देयर आर नोन अननोन्स, देयर आर अननोन अननोन्स, राइट? तो एज अ फंड मैनेजर यू हैव टू थिंक लाइक दैट. तो यू विल नो कि देयर आर नोन अननोन्स, you will build in your model valuation, etc. But you will always keep in your mind that there are unknown unknowns, and I need to have some kind of risk management process for that, right? It may not be a stock specific, but then you build it into terms of diversification, right? Some people, so sometime fund investors ask a question कि यार आप लोग 50 स्टॉक क्यों लेते हो? आप प्रोफेशनल मनी मैनेजर हो, आपको तो पता होना चाहिए कि ये 20 स्टॉक अच्छा करेंगे, तो 20 में ही पैसा डालो, right? They don't realize that it is a ex ante risk management system. It is not something that we are trying to create massive return out of it. It's just a part of ex ante risk management, because we know that post facto risk management may not work, right? Or the positive outcome that we will have out of post facto risk management is not that good. तो all these events, people worry when they think कि हमको इस इवेंट प्ले आउट होने के बाद या इवेंट प्ले होने से पहले रिस्क मैनेज करना है. ऐसा नहीं होता. यू कांट डू दैट, राइट? You have to think in terms of when you are entering a position ki where is would be the risk and how do I manage it. So I think that's important for investors to appreciate. सो मार्केट मूव्स या हेडलाइन न्यूज से ज़्यादा एक राइट माइंडसेट Correct. बहुत ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, वेयर नॉट जस्ट
वाइल और बिफोर क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कॉमन वर्ड ऑन स्ट्रीट है, राइट, जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो किसी को चांस नहीं देता है, जब नीचे जाता है तो भी किसी को चांस नहीं देता है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्ले आउट दैट इवेंट प्रॉब्ली, इवन दो दे अंडरस्टैंड और डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इवेंट रियली वेल. एंड जहाँ तक हमने अनसर्टेनिटीज के बारे में बात करी, जो जैसा आपने सही समझाया कि इट्स नॉट मोर टू डू विद अनसर्टेनिटीज, इट्स मोर टू डू विद ट्रांजिशंस जो हमने आज नहीं तो पहले कभी देखे हैं. And you just have to see how you manage those transitions really well. So yeah, on that note, thank you so much, Anupam, for joining us here with us today and giving your insights on these topics. So yeah, thank you once again. थैंक यू राघव, थैंक्स अ लॉट. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.